Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 19th July 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के important articles cover करेंगे. In this video, we'll cover two important articles. The first one is about India's climate imperative. It's a very important article today. And then we'll talk about a grocery for the troubled global economy. So these are the two articles that we'll be covering in this video lecture. So let's begin with it. Our first article, India's climate imperative. It is important from paper 2 as well as from paper 3 point of view. If we see that we have attributes of heat wave in Rajasthan, UP, Gujarat, New Delhi, and this comes as a wrath to our earth rather than acknowledging the anthropogenic global warming. ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ रही हैं जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है इट इज़ कमिंग अप एज अ रैथ बी इट द हीट वेव रिसेंटली जो नदर्न इंडिया में एक्सपीरियंस की गई है. व्हाट इज़ द इशू और व्हाट हैज़ बीन द इशू? अब देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट इन द एब्सेंस ऑफ कोविड-19, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स थे दे हैव बीन हैविंग इंडिया एट द बिगेस्ट रेड अलर्ट इन द रिसेंट ईयर. अब राजस्थान, यूपी, गुजरात, न्यू दिल्ली इस बार हीट वेव आई. साउथ इंडिया में 2021 में देयर वाज अ सो हेवी रेनफॉल, टोरेंशियल डाउनपोर वहाँ पे रहा. एंड वेस्ट बंगाल में सुपर साइक्लोन एम्फान ने डिजास्टर क्रिएट किया. उड़ीसा में भी इसके इम्पैक्ट्स आए 2020 में. All these are symbols of man-made climate change. The temperature over Indian Ocean has increased by 1 degree Celsius since 1950s only. And जिसके चलते ये जो extreme weather events हैं ये लगातार increase होते जा रहे हैं. India is the fourth worst hit in climate migration. जो हमें climate migration देखने के लिए मिल रहा है all over the world, India is the fourth worst hit country in that. Heat waves in India have claimed almost an estimated 17,000 lives since 1970s. Because of the rising heat, there is labor losses. And अगर हम estimate करें तो जिस तरह का labor loss हो रहा है, this could reach to 1.6 lakh crore annually if global warming exceeds 2 degrees Celsius, with India being among the hardest hit countries. Therefore, India needs two-part approach. हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए to adapt to this climate impact. We need to build our resilience against these weather extremes. The first one is adaptation and to build the resilience. Whereas the second approach has to be to mitigate the environmental destruction to prevent climate change from becoming more lethal. These could be the two-part approaches that India need to follow. So, talking about the first one, how can we achieve climate resilience? देखें, heat waves आई, they hit India swathly. Now, these heat waves were basically aggravated because of deforestation, land degradation, और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से it further increases the tendency of wildfires. If we talk about agriculture, which is basically water intensive, it does not do well in the heat wave prone areas. So, the one solution is to promote agricultural practices which are not water intensive, first of all. Also, we need to support afforestation that has a very salutary effect on the warming. Also, the financial transfers can be targeted to help farmers plant trees, to build equipment. Now, see, drip irrigation. इससे जो वाटर जो की यूजेज है, जो हेवी वाटर यूजेज है, वो कितनी रिड्यूस हो सकती है? सो वी नीड टू डू फाइनेंशियल ट्रांसफर्स एज वेल ताकि फार्मर्स को भी हेल्प मिल सके, so they can shift towards such practices.
We need insurance schemes that can transfer some of the risk of extreme heat, which is faced by the industrial, the construction, and the agriculture workers, to the insurers. Also, the climate change resilient agriculture calls for diversification. For example, there is cultivation of multiple crops on the same land, same farm. We need such kind of practices. These will build our climatic resilience. Also, we need to localize food production. We need weather based crop insurance. Flood and storms are worsened by vast sea ingress and the coastline erosion, especially जो low lying areas in south में वहाँ पे ज़्यादा worsen up हो जाता है. We need to work for that as well. So for that, जितनी भी southern states हैं, इनको stronger guidelines के साथ आना होगा, so that we can avoid construction in these kind of locations जहाँ पे इस तरह की drainage है. It is also vital to map the flood risk zones, ताकि जो भी वल्नरेबल रीजन्स हैं हमें उनका पता चल सके और हम उनको मैनेज कर पाए. जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, इन सब के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी होना चाहिए. केरला हैज सम फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस विच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन पिलर्स. तो जो कम्युनिटीज हैं वो राउंड शेप हाउसेस बना सकती हैं. दे शुड कंसिडर द ऑप्टिमम एरोडायनेमिक ओरिएंटेशन, ताकि जो विंड्स आ रही हैं उनकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो पाए. The roofs with multiple slopes can also stand well in the strong winds. और जो सेंट्रल शाफ्ट बना देते हैं उससे जो विंड का प्रेशर है जो रूफ के ऊपर पड़ता है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इट सक इन एयर फ्रॉम आउटसाइड. तो इन सब मेजर्स के साथ हम हमारी रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं. वी कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट. एंड the second approach was to mitigate it, to arrest the climate change. How can that be done? See, all the leading emitters, including India, we need to move away from fossil fuel. But climate mitigation, if we talk about whole solely about climate mitigation, it is painfully slow. It will go painfully slow everywhere it is because of lack of political will. Now, India has made a slow progress in choosing 2070 as the target for net zero emissions. India gained from being part of Glasgow Declaration on Forest Protection, and then 141 countries signed it in 2021. Similarly, we talk about management of dams. They can also exhibit glacial lake outburst, floods. There are nearly 295 dams in India, and more than which are 100 years old, and they need repair. फिर लैंडस्लाइड आ जाता है. The kind of cases we are seeing in Uttarakhand, the cases of landslide, the regulations must stop the building of dams on such a steep slope or on these eco-fragile areas, as well as on the dynamiting of the hills and the sand mining and quarrying. All these things need to be regulated. The dams in southern states, they can moderate floods, but only if they're operated year round, so that they can anticipate the need to control the flow during the floods. And then for all of this, climate finance is the most suited for the large scale global funding that should come from World Bank, IMF, and Asian Development Bank. So what is the way forward? See, India's share in disaster management should be raised to 2.5% of our GDP. Adaptation alone cannot slow down the climatic damages if the warming of sea level is not confronted. So we need adaptation, we also need mitigation. So the big part of climate action lies in protecting and expanding the forest coverage. All the regulations need to be tightened. They need to be enforced to ensure that there is forest protection while acquiring the land. There should be public awareness to drive climate action. We need to consider all the climate catastrophes are largely man made only. It's a beautiful article
in which you can understand the our imperative of climate change. What should India do? How should we move ahead? So there is one part of adaptation, and then there is other part of mitigation. Moving ahead, our next article is important from Indian economy point of view. It is about a grocery of for the troubled global economy. मतलब बेसिकली अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी में जो जो इश्यूज आ रहे हैं उन सबकी एक ग्रोसरी है. आपको सम अप हो जाएगा कि ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है. जून मंथ में यूएस की इन्फ्लेशन रेट 9.1 है, 9.1%, एंड दिस इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 40 years. इसके अलावा जो यील्ड इन्वर्जन है वो हो रही है. देयर इज इशू ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग, रिवर्स करेंसी वॉर. ऑल ऑफ दीज आर कमिंग इन बिग पिक्चर. तो इस आर्टिकल में हम ये सब कवर करेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू ग्लोबल इकोनॉमी, व्हाट आर दी व्हाट आर बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड का क्या फर्क आ रहा है. व्हाट इज दिस बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन, इस इन्वर्जन से होगा क्या, व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग, व्हाट इज दिस रिवर्स करेंसी वॉर. सी ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं आजकल इकोनॉमी से रिलेटेड, ये टर्म्स बहुत क्विकली यूज की जा रही हैं बिकॉज दीज आर सम ऑफ दी the hot topics. These are the topics which are in big picture right now if we talk about global economy. So you should have an idea, you should know what these terms exactly mean. So now let's take a overall picture of the global economy. Let's understand what's happening. So हमने फॉलो किया. हम अगर आप प्रीवियस करंट अफेयर वीडियोस देखेंगे, ट्यूटोरियल्स देखेंगे, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि यूएस सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया है. एंड यूएस में इन्फ्लेशन रेट 9.1% पे पहुंच गई थी दी मंथ ऑफ जून, जो कि पिछले लास्ट 40 years में हाईएस्ट रही है. ये सिचुएशन आई हमारे पास. ऑल्सो it pointed towards inversion of US yield curve. एंड यहां से हमें ये पॉइंट आउट किया गया कि जो यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, दे विल नॉट बी एबल टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर द इकोनॉमी. तो दो टर्म आ गई कि एक तो यूएस का यील्ड कर्व इन्वर्स हो गया है, देयर इज इन्वर्जन ऑफ द यील्ड कर्व, एंड सेकेंडली यूएस सेंट्रल बैंक विल नॉट हैव दिस सॉफ्ट लैंडिंग फॉर इकोनॉमी. व्हाट डू दैट मीन? Another thing is US dollar is growing. It's gaining a lot against all the other currencies, जिसे हम एक रिवर्स करेंसी वॉर के जैसे भी देख सकते हैं. And now most of the central banks all over the world, they are trying to raise their interest rate so that they can counter the US federal bank's action, and they can ensure that their respective currency clawbacks value against the dollar. हमने हमारी कल की वीडियो में भी डॉलर डिपेंडेंस की बात की थी. आरबीआई भी ऐसे स्टेप ले रहा है जिससे हमारी डॉलर डिपेंडेंस कम हो पाए. This is something which is overall happening in our economy. Let's begin with the situation. So सबसे पहले क्वेश्चन आता है, what are bonds? देखें, bonds are instrument to borrow money. They could be floated, they could be issued by the country's government or by a company, basically to raise fund. So you issue bond is a financial instrument through which you borrow money. अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इंडिया में उनको बोलते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी. यूएस में बोलते हैं ट्रेजरी, यूके में बोलते हैं गिल्ड्स. All of these, they come with sovereign guarantee. They're considered as one of the safest investment. They also give low return on investment. That is called as yield. Yield क्या है? The return on the investment. So if you invest in a corporate bond, it tend to be more riskier because there are chances of failure. So therefore the chances that the company is not going to repay the loan, that is higher. So here comes bond yield. Bond yield is the effective rate of return that is earned. Now rate of return जो होता है वो फिक्स नहीं होता, it changes with the price of bond. तो हर एक जो बॉन्ड होता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है और एक कूपन पेमेंट होती है.
There is also the price of the bond, which may be or may not be equal to the face value of the bond. ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहीं से बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन भी आ जाता है। अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेशंस भी दे रेज मनी फ्रॉम पीपल। तो गवर्नमेंट को अगर मनी चाहिए तो दे इशू बॉन्ड, लोग बॉन्ड खरीदते हैं और पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं। And by this method, by investing in government bond yield, it is a very good way to understand the risk-free interest rate in that economy. जो बॉन्ड यील्ड कर्व होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो बॉन्ड लिया गया है उसमें कितना यील्ड निकल के आ रहा है ओवर द डिफरेंट टाइम होराइजन। सिंपल सी बात है, अगर सपोज वन वाज टू टेक यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, हमने यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया ऑफ डिफरेंट टेन्योर, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का है, और हमने उसको प्लॉट किया कि वो कितनी यील्ड प्रोवाइड करेगा। वो होता है हमारा यील्ड कर्व। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड बन जाता है। मतलब अगर किसी ने 2 years के टेन्योर के लिए बॉन्ड लिया, दे एंड अप पेइंग आउट हायर यील्ड देन द बॉन्ड यील्ड विद 10 year टेन्योर। तो ये जो इन्वर्जन होता है ये सजेस्ट करता है दैट द इन्वेस्टर्स दे एक्सपेक्ट दैट फ्यूचर ग्रोथ इज गोइंग टू बी वीक। So this corresponds when the investors they feel buoyant about their economy, so they pull the money out of the long term bonds। वो long term bonds से पैसा निकाल के short term bonds में डालना शुरू कर देते हैं, जो रिस्की एसेट्स होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, इन सब में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। So they take the money out from the long term bond। दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म वाले जो बॉन्ड्स हैं दे आर एंडिंग अप गेटिंग मोर हायर यील्ड देन दी लॉन्ग टर्म टेन्योर बॉन्ड्स। सो इन बॉन्ड मार्केट द प्राइसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स दे फॉल, एंड इससे क्या होता है, उनकी जो यील्ड है, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज देखो बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड प्राइस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगी, अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो यील्ड कम हो जाएगी। लेकिन जब भी इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो किसी ट्रबलसम सिचुएशन में है, सो दे पुल आउट मनी फ्रॉम द शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स एंड दे पुल देम इनटू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। एंड इसके साथ क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं दे राइज, और उनकी जो यील्ड है वो फॉल कर जाती है। And over the year, the inversion of bond yield curve has become a stronger, predictor of the recession। कि भाई जैसे लगने लगा कि अब इकोनॉमी खतरे में है, तो शॉर्ट टर्म से निकाल कर लॉन्ग टर्म में डाल दिया। So that is how it is said that it is a predictor of the recession। And for it to be taken seriously, the inversion has to last for several months। अभी पिछले कुछ वीक से ये इन्वर्जन यूएस में लगातार हो रही है, विच इज अगेन सजेस्ट दैट कि जो रिसेशन है वो आ सकती है। करंट अगर हम स्टांस देखें तो यूएस का जो फेडरल बैंक है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, दे आर रेजिंग द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ताकि कुछ जो शॉर्ट एंड यील्ड कर्व्स हैं उनके ऊपर बम्प अप्स लग सके, एंड इट इज फॉर द डैम्पनिंग अप देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर कहा गया सॉफ्ट लैंडिंग। अब सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, देखो अब यूएस फेडरल बैंक जो है उनकी मॉनेटरी टाइटनिंग चल रही है। वो करंटली दे आर रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई, दे आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। फेडरल बैंक इज डूइंग सो क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, दे वांट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आइडियली सेंट्रल बैंक ये तब करता है व्हेन दे आर ब्रिंगिंग मॉनेटरी टाइटनिंग in such a manner that slows down the economy but does not lead to recession। इस तरह से होता है कि आप टाइटनिंग भी कर रहे हो, इकोनॉमी को स्लो डाउन भी कर रहे हो, लेकिन इससे रिसेशन नहीं आएगा। जब बैंक सक्सेसफुली स्लो डाउन कर देता है इकोनॉमी को विदाउट ब्रिंगिंग द रिसेशन, इट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट लैंडिंग, कि भाई कोई भी हर्ट नहीं हुआ, इकोनॉमी भी स्लो डाउन कर दी, मनी सप्लाई भी रिड्यूस कर दी, लेकिन
रिसेशन भी नहीं आया, nobody was hurt. But when the actions of central bank ultimately leads toward recession, that is called as hard landing. तो अभी तो ये इंडिकेशन हो रही है कि जो डिसीजंस वहां पे लिए जा रहे हैं, it is possible that there's not going to be the case of soft landing. तो ये आपको पता होना चाहिए. लास्टली टर्म यूज की जाती है रिवर्स करेंसी वॉर. अब देखो ये फ्लिप साइड है. जो यूएस फेडरल बैंक ने जो एक्शन लिया जिसमें उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, more and more investors they are rushing towards US to invest their money there. जिसकी वजह से क्या हुआ, बाकी सभी कंट्रीज में जो डॉलर था वो स्ट्रॉन्गर हो गया एज कंपेयर टू द अदर करेंसी, और डॉलर की जो डिमांड थी वो बढ़ गई. येन के कंपैरिजन में, यूरो के कंपैरिजन में, युआन के कंपैरिजन में डॉलर की डिमांड बढ़ गई. सो ऑन द फेस ऑफ इट दिस शुड मेक ऑल द अदर कंट्रीज हैप्पी बिकॉज देयर इज रिलेटिव वीकनेस ऑफ देयर लोकल करेंसी. तो इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाते हैं. एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो ग्लोबली उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है. अब इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स या चाइना के एक्सपोर्टर्स को बहुत बूस्ट मिलेगा. रुपी फॉल कर गया तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो और कॉम्पिटिटिव हो गया. इसी को यूएस ने पिछले कुछ टाइम में एक्यूज भी किया था कि कुछ कंट्रीज उनकी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं. दे कीपिंग द करेंसी वीकर अगेंस्ट द डॉलर ताकि वो ट्रेड सरप्लस में आते रहें अगेंस्ट द यूएस. इसे बोलते हैं करेंसी वॉर. लेकिन आज उल्टा हो गया. एवरी सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो यूएस फेडरल बैंक के एक डिसीजन को काउंटर कैसे करें. वो अपने खुद के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं ताकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट ज्यादा वैल्यू लूज ना कर जाए. तो दिस इज द रिवर्स करेंसी वॉर. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट a stronger dollar has had a key benefit, that is importing cheaper crude oil. Crude oil cheaper हो जाता है. On the other hand, a currency which is losing value to the dollar, for them imports become costlier. अब इंडिया के लिए डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई. For them, the imports will become costlier. The commodities which are imported will become costlier because all of these are oftenly traded in dollars. However, raising the interest rate is not without its own risk. जस्ट लाइक यूएस, बाकी इकोनॉमीज के लिए भी अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, आप इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हो, इट डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग. ऑल द अदर इकोनॉमीज आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होती तो. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.